One, two, three, Hey everyone, welcome back to my channel. This is your host Neeta Rawat, aka Neet Uplifts. I'm a certified life coach, a content creator, a motivational speaker and writer, and a YouTuber. And in today's video, we're going to talk about how to embrace your true self, the way you are. आप जैसे हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, how to embrace yourself. See, as a human being, हमारा tendency ऐसा होता है that we हम दूसरे लोगों में वो चीज़ें ढूंढते हैं कि we have to be more like them or her or him. So as a human being, and that's very normal because as a human being हम सबको ऐसा लगता है कि we are not enough, at least not in our young age. When we grow, when we add little bit of years of in our journey, then we realize somehow that no, all life is all about figuring yourself out. अपने आप को फिगर करना है, किसी को कुछ नहीं पड़ा. यस, लाइफ इज लाइक फिल्ड विद टन्स ऑफ पीपल. दुनिया में बहुत लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, फेमस है नहीं है. नो, आपको सिर्फ ये सीखना है कि आप अपने आप को कैसे रखेंगे, अपनी चीज़ों को कैसे डील करेंगे. अगर आप पे कोई अच्छाई है तो उसमें खुश कैसे रहें. आप पे कोई आपके साथ कोई चीज़ बुरी है या कुछ भी है, मीन्स देयर आर टन्स ऑफ एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने तरीके से एज अ if I am making video, I would like to use myself as an example because when I was very young, तो मुझे ऐसा होता था कि I used to take other people, like एक होता है ना, जैसे हम सेलिब्रिटी को अपना आइडल मानते हैं, बट I used to do it with people. If random person I find, oh that girl is so beautiful, oh that boy is like he has good talents about anything, I used to force myself. Actually, force is the correct word. That I used to force myself that yes, I have to become the way that person is. I used to find it interesting, and I used to do that when I was very young. Like I was a teenager, like 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. I was definitely not the kind of version I am today. I was not even a single bit of that person. मुझे बहुत वक्त लगा अपने आप को इस तरह से बनाने के लिए. आज मैं जो भी हूँ, आई नो माई फॉल्ट, आई नो मेरे अंदर क्या कमियाँ है, मेरे अंदर क्या अच्छाई है. मैं जो हूँ, आई नो मी, और मुझे क्या चाहिए मुझे पता है. मे बी मुझे सारी दुनिया आके बोल दे नीता दिस इज रॉन्ग, आई एम नॉट मीन्स कि नार्सिसिस्ट वे में कि नो ये गलत है, मतलब जस्ट बिकॉज मुझे सही लग रहा है. नो, आई मीन आई नो मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे किस किस चीज़ों में काम करना है या मुझे किस चीज़ में काम नहीं करना है. आई मेंट कि मुझे आई नो हु आई एम, आई नो वट आई वॉन्ट, एंड आई नो वेयर आई एम गोइंग. Even if things don't happen the way I want to, that's okay. Because I love me. And that's what you want. You really need the whole purpose of this video is, how to embrace your true self. The way आप जैसे हैं वैसे ही रहें. उसको accept करो. उसमें embrace करो. काम कर सकते हो तो काम करो. The only thing that you don't have to do is उस चीज़ के पीछे रोना नहीं है. A man is watching, a boy is watching, a kid is watching, or a woman is watching. Anywhere, it's for you. Just love the way you are. Find your qualities, accept your kamiya and everything. And also, it took me a lot of time to realize that life was never that difficult. And seriously, I know there are so much of pain, sufferings out there for people who have actual genuine problems. Seriously, you don't know what is going on with me. You don't know what I have been through or not. You have no idea. आपको कुछ नहीं पता. Similarly, I don't know आपकी लाइफ में क्या रहा है, आपकी लाइफ में आपके कैसे दिन देखे हैं, कितनी मेहनत करी है, क्या करा है. I can never judge the front person on the basis of just interaction of one or two interaction, है ना. You will see, the moment you start talking to somebody, you will realize everyone is happy as long as you actually sit one-on-one on a cup of tea and talk to them. Then you realize every person has a ton, it's like ocean of problems in their life. Be it small or bigger, it doesn't matter. हर लोगों के लिए, हर इंसान के लिए problems. मेरे लिए जो छोटी प्रॉब्लम है किसी और के लिए वो बड़ी हो सकती है, किसी और की छोटी या बड़ी प्रॉब्लम वो मेरे लिए अलग तरीके से हो सकती है. इट्स बिकॉज वी आर डिफरेंट पीपल. इट इज मेंट टू बी. हम उसके जैसे नहीं बन सकते. इफ यू विल ट्राई, अगर आप कोशिश भी करेंगे उसकी तरह या किसी और की तरह बनने के लिए, फॉर सम टाइम, इवन इफ यू लाइक इट, एट द एंड what takes you ahead in life by is your true version, is your most authentic self. That's what I learned in my journey, that being the most authentic self of yourself is
next to perfection. Even if you are not on that zone, like the most being perfect, beautiful, means everyone has a different criteria of, happy life. It doesn't have to be same for everyone. Everyone has to figure out their own cup of tea. The moment you find out what you want, what your qualities are, your dislikes, and there are things that you have to work on yourself, the moment you do that, you will start everything in a way you can only imagine your life. Okay, so this is to everyone, this is to all my beautiful subscribers, that try embracing your true form and seriously do that, because embracing your true nature, it's like, for example, if a fish was supposed to be inside water, she was meant to be, just like टाइगर वॉज मेंट टू बी ऑन अ लैंड. ये बहुत ही ऐसे कोई रिलेटेबल हो सकता है, नहीं हो सकता, आई डोंट नो. बट जैसे एक फिश पानी के लिए बनी है, सिमिलरली एवरी इंडिविजुअल इज मेंट फॉर accepting and embracing their own behavior in their own way. So that's it for today. I hope you all are good. Stay fiery, stay fearless, and stay connected to me. Signing off, your life coach, Neeta Rawat. Until next time. Bye bye.